In Delhi, people are living amidst an ecological and public health crisis. डायबिटीज़ है, कैंसर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, टीबी है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है, बहुत कुछ ऐसी बीमारियां पैदा हो रही हैं कि उन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा. Scattered across the city are mountains of trash, poisoning the community and emitting an inescapable stench of rot. पानी आते हैं, खत्ता का पानी आते हैं, खत्ता के लाल बुरुंग, ये सब बीमारी है, ये खत्ता में. They stand as symbols of Delhi's inability to deal with its rubbish. And yet the true menace of these trash mountains is one that's largely invisible. Pieces of plastic are being burned, discarded textiles are being burned. So we don't even know what kind of poisons are coming out. So what's behind this growing crisis, and can anything be done to stop it? I'm in the neighbourhood of Bhalswa in northern Delhi. It is home to more than 250,000 people and one of India's largest dump sites. Every day, more than 10,000 tonnes of Delhi's rubbish is discarded here. So you're segregating all of अलग it? अलग करना पड़ता है ये सब क्वालिटी अलग अलग करनी पड़ती है. Usha has been reliant on the dump since she was 10 years old. She works as a rag picker, sorting through the mountains of waste by hand, earning the equivalent of just £2.50 a day. तो मेरी शादी हुई थी 13 साल में यहाँ पे आने के बाद. तो मेरे घर वाले दारू पीते थे, जुआ खेलते थे. रात को भी उनके आती थी, फिर सुबह सोती थी, फिर छटाई करती थी सुबह. Both Usha and her mother suffered severe health problems as a result of years living and working in the shadow of Bhalswa's trash mountain. This is the TB. पहले सांस लेने में बहुत परेशानी होती थी, सांस भी नहीं ले पाती, बात भी नहीं कर पाती थी. Wow. Yeah, this is the liquid. Yeah. Why do you have to continue doing a job which has had such a terrible impact on your health? सर मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैं लिखना पढ़ना मुझे आता नहीं है. कोई फैक्ट्री में लगाएगा नहीं जब तक मैं पढ़ी लिखी नहीं, तो मेरे को कबाड़ा ही बिनना पड़ेगा. And what toll did this work take on your mother's health? What impact did you see it having on her over the years? तो उसी से ना मेरी मम्मी को धूल मट्टी जैसे कांच पे जैसे ऐसे मारते ना, कलचा मारते हैं वो ऐसे नीचे करने के लिए, तो ऐसे खींचते उसके अंदर धूल मट्टी भी जाती है सांस के द्वार अंदर. तो उसी से मेरी मम्मी को टीबी भी हो गई थी. बुढ़ारी की तरफ हॉस्पिटल था, मैं थी अपनी मम्मी के साथ. पूरी रात मेरी मम्मी तड़पती रही, मैं डॉक्टर को बुलाती रही, कोई डॉक्टर नहीं आया. एक्टिव एयर पे लगा दिया तो उनको सांस लेने में भी बहुत परेशानी हो रही थी. फिर तीसरे चौथे दिन ख़त्म हो गई थी. अब उस टाइम तो थोड़ा सही था, अब तो बहुत बेकार हालत है. इस टाइम तो कोई दुख सुख पूछने वाला भी नहीं है. Shielded by narrow streets and dense residential blocks, the true scale of Bhalswa's dump remains hidden until you approach it. Unbelievable. Nearly half a mile wide and 60 metres high, it dominates the skyline, a grim landmark of Delhi's waste crisis. Oh my God, it smells so bad. खाली टिश्यू पेपर जो उसके डब्बे डब्बे, उस तरफ पन्नी है, बोतलें हैं, उधर पानी की बोतलें. Those are the like eco toothbrushes that they give to people as like the environmental option. And this is where they go. It's insane. Like Usha, many begin working here as children, some as young as 3 years old. They climb barefoot over heaps of rubbish, scavenging for plastic, glass, and metal to sell. And so they burn the wires for the metal. Heavily toxic fires. We need to not be downwind of this. Yeah. I mean, you can understand why Delhi's air is the worst in the world when you come up here. सारे खत्ते में कबाड़ी आदमी इतना दूर के है, सारे खत्ते में काम करते हैं. बच्चा से चल नहीं जाएगा तो भूख रह जाएगा. अत्याचार के कोई रोजगार नहीं है. How has it affected the health of you and everyone around you? बीमारी है, गोर में शीशा लग जाता है, सुई लग जाता है,
शीशा गिर गए, आवे हम देख न पाए। कल गए मेडिकल में, चीर के ऑपरेशन कर दिए, ये 2 अंगूठा काट दिए। ये सब बीमारी है, ये खत्म। In nearby clinics, doctors see the human toll of the mountain every day. This doctor's waiting room is filled with patients suffering from chronic respiratory diseases, kidney problems, and lung damage. देखो केमिकल इसकी वजह से, पोल्यूशन की वजह से बच्चों में तो बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चों को निमोनिया, खांसी, फिर खून की कमी, बार बार बीमार होते रहेगा बच्चा। एक बच्चा महीना में 10 बार बीमार होगा तो उसको क्या होगा? दवाई खाते रहेगा तो फिर धीरे धीरे फिर उसमें खून की कमी आ जाता है, परेशानी होता है बहुत, बच्चा भी चला जाता है। बहुत से होता है ऐसा अच्छा यहाँ पे। तो इसको ना एक शीशी ले जाओ सुखाने की। Does it make you angry to see the residents around here being just poisoned by this Bhalswa dump? मैं तो कम से कम 30 साल से दिल्ली में हूँ, मैं तो देख रहा हूँ यही नौटंकी। मैंने कितनी सरकार देखा, बीजेपी का देखा, कांग्रेस का देखा, बाकी सब एक वादा करता है, बाकी कुछ नहीं करता है। देखो बंदा को टीबी की इलाज कराता है सरकारी हॉस्पिटल वाला, उसको भी फिर दोबारा टीबी हो जाता है। 3 बार यहाँ पे 3 बार टीबी हो रहा है, ऐसा भी पेशेंट है। सरकार क्या करता है? कुछ करता ही नहीं है। ढंग का अगर सरकार होता ना तो पब्लिक भी इतना परेशानी नहीं है, पब्लिक को परेशानी नहीं होता। So as well as all this rubbish and toxic waste that is visible to the eye, these mountains are also environmentally catastrophic for a reason that we actually can't see. Satellite data has identified Delhi as one of the world's worst emitters of methane, a potent greenhouse gas that traps 82 times more heat than carbon dioxide. Methane is produced by the vast piles of rotting wet waste and food scraps dumped here. Since 2020, Bhalswa has recorded 24 major methane leaks, at times releasing 208 tonnes per hour, equal to emissions from 33 million cars. With no system to capture it, the gas escapes freely into the atmosphere. During Delhi's scorching summers, the methane regularly catches on fire, turning the trash mountains into burning toxic infernos that poison the air. Despite government promises to clear these sites by 2024, the mountains keep growing. क्योंकि ये तो सरासर मौत का निशानी है, क्योंकि इसमें से जितना मीथेन गैस निकलता है, क्योंकि घटने की तो कहीं से चांस ही नहीं दिखाई दे रहा है। जितना सरकार ने बोला है कि इसको कम कर दो, तो ये वो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ गड्ढा दिखाई दे रहा है, जिस कॉलोनी में गड्ढा दिखाई दे रहा, पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा, तो ये ले जा करके कूड़ा सारा वहाँ पर डाल रहे हैं। क्योंकि हम ही अगर घर से कूड़ा अगर अलग अलग करके दें, सूखा अलग, गीला अलग, तो फिर यहाँ इतना बड़ा लैंडफिल तो तैयार नहीं होगा। Does anyone help you with all the poison that you get because you live here and you have to work here? तो गवर्नमेंट तो हमारे लिए कुछ ना कल करी है ना आज करी है, और ना वो हमारे लिए कुछ सोचती है। सिर्फ जब इलेक्शन होता है हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि हमारे को याद करो, हमारे लिए कुछ करो, और फिर जब जीत जाते हैं अपने घर में बैठ जाते हैं। लोग बाग ऐसे ही मर जाते हैं कूड़े कबाड़ में अपनी ज़िंदगी। To find out if there's any progress in tackling this crisis, I'm meeting with local politician Ajesh Yadav to ask what, if anything, is being done to dismantle these toxic mountains. 60% लैंड हमने खाली करा लिया है। 2025 में मुझे पता है इस पे जिस स्पीड से काम हो रहा है कि इसको बिल्कुल हम क्लीन कर देंगे। How is the landfill going to ultimately be removed if rubbish is still coming onto it every day? कूड़े का पहाड़ बोलते हैं, तो इस कूड़े के पहाड़ को हम बहुत जल्दी यहाँ से ख़त्म कर देंगे। तो इस पे बहुत स्पीड से काम है और जल्दी ही इनको हम यहाँ से हटा देंगे। People say they feel abandoned by the government. What is your response to that? Do you feel like your government is looking out for these people, is helping them in this situation? नहीं, जिस वक्त मैं इस क्षेत्र में आया था, जब मैं विधायक बना था, आप बिलीव नहीं कर सकते, ये इससे 100 टाइम ज़्यादा गंदा था। हमारे आने के बाद इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। कभी काम ख़त्म नहीं होते, हम लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कम से कम अपने पूरी बादली विधानसभा को बहुत अच्छे से मैं क्लीन करूँगा और अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। Officials continue to repeat the same message. It will be done soon. Not long after we met, Yadav was voted out of office. The situation in Bhalswa remains the same.
This mountain obviously cannot be left as it is, this kind of festering wasteland that's poisoning the neighborhoods around it and poisoning the people that work on it. But at the same time, there is this whole ecosystem of people who rely on this mountain, who make a living off it, who couldn't survive if it didn't exist. How difficult is it to come up here every day for 18 years? बहुत मुश्किल होता है तो होता है बदबू नहीं रहेगा तो भाई काम कैसे कर मिलेगा किसी का थोड़ी दवा है इसमें अपना मर्जी है काम करो या ना करो इसके खत्ते पे चढ़ना मुश्किल है ऊपर जाने में छोटे छोटे बच्चे हैं What would it mean to you if they removed this mountain entirely? अरे एक ही खत्ता थोड़ी है यहाँ से लेके बवाना तक खत्ता है सब कुछ तो है 5-7 जगह है If you go down to the neighborhood that exists around this mountain, you can see everyone here is sorting trash, they've picked trash, even if they're not going up, they're making a living off it. And so it's hard to see what would happen to those people if this mountain was completely removed. I think there's no doubt that there is no solution that doesn't involve the waste pickers. They're one of the few groups of people that are not replaceable. They understand waste like how. I mean, 52 types of plastic, who else gets it? Your recycling facilities would go bust if there were no waste pickers. If we could shift and move out the private sector actors to merely taking unwanted segregated waste to landfills or other facilities and allow waste pickers to actually run local systems, that would be inclusion. A solution touted by the government is waste-to-energy plants, where the rubbish is burned and then converted into electricity. But in Delhi, these plants have been found to routinely flout environmental standards and have received heavy fines for dangerously toxic emissions and dumping harmful waste. Do you see a future for India where rubbish isn't a kind of national catastrophe, where it isn't a kind of great burden on the country? Well, I'm not sure India is the only country where waste is a national catastrophe. Not at all, and the reason I say it is every country that I can think of has had a crisis, and they've either dealt with it by sending it to another country, but we don't have another country to send it to, and we shouldn't, you know. We don't want technologies like waste to energy because it's a burden on both the exchequer and we take the burden in our bodies. The challenge for India is you have to decarbonize and you have to grow. So how do you do both? Amidst broken promises and government inaction, people like Usha are left breathing poisonous air and working in lethal conditions, their hopes for the future buried beneath the waste. बोलोगे तो वही लड़ाई झगड़ा होता है आपस में, कोई कमज़ोर है कोई ताकतवर है, तो इसलिए कमज़ोर को तो दबना पड़ता है ना, ताकत वाला इंसान तो पीट के ही जाएगा ताकत वाला तो इसलिए मैं बोलती नहीं किसी कुछ भाई को कुछ भी करो।